Darshan Bandhu, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure that for our valedictory session, as the chief guest, we have amongst us Shri Priti Ranjan Gadeji, Honorable Minister of Rural Development, Skill Development and Technical Education, Government of Odisha. Sir को बहुत बहुत स्वागत এবং ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକି ସରଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ ଏମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ he is one of the most youthful and dynamic leaders of the state. He represents Sukinda Assembly constituency. Ebong Bortaman he is shouldering the responsibility of Minister of State Independent Charge, Skill Development, Rural Development and Technical Education, Government of Odisha. Ladies and gentlemen, as the guest of honor for the valedictory session, we have the privilege of the presence of Madam Nilanjana Mukherjee, Vice President and Unit Head of Amri Hospitals Limited in Bhubaneswar. Ms. Mukherjee started her career in hotel industry with Taj Group of Hotels. She has also worked with groups like Apollo and Columbia Asia, apart from Amri in different areas and location. She is currently the Unit Head at Amri Hospitals, which she joined in 2015 as General Manager and has been instrumental in its growth from 30 beds to 400 beds hospital. Madam, a very good afternoon and welcome to the valedictory session. And now, অনুরোধ করিবি এবং পুଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି to our group editor of Odisha Bytes and Odisha Sambad, Shri Sandeep Mishra ji এবং ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି editor of Odisha Bytes, Ms. Punya Prabha Ratha madam को. So ladies and gentlemen, the dais is all set for the valedictory session. And आम समस्त तरफ आम पुष्पगुच्छ दे आमर माननीय मंत्री महोदय आम गेस्ट ऑफ ऑनर नीलांजना मैडम को आज सभा को आज सुश्रुत द हेल्थ कॉन्क्लेव वैलेडिक्टरी सेशन को स्वागत करवा. Thank you so much, and without further ado, I would request Ms. Nilanjana Mukherjee madam to address us, please, ma'am. Now गोटे जोरदार ताड़ी देकरी आम स्वागत करवा मैडम को पुणी थरे. Thank you very much. My regards to the Honorable Minister, my regards to all my seniors, very, very eminent doctors. My special thanks to Sandeep Mishra ji for organizing this event. So I have been listening the entire conclave, but I would like to start as a hospital administrator. And to begin, I would like to share a small incident which happened to me during the COVID. So there was this patient who got admitted at the age of 75. His son was a very eminent personality and also a very highly placed officer in one of the PSUs. And he was brought to our hospital quite a critical stage. And when we asked his son to come and fill the consent form, his son refused to even come into the hospital to fill the consent form because his father was detected with COVID. Eventually, this gentleman, he succumbed to after 15 days. And then I got a call. And during this entire period, I got calls from very, very senior people of the government, of the different PSUs, that this patient should be taken care. After 15 days, when this old man succumbed, his son called me to say that, Madam, don't you have any services where my father can be sent for funeral? Because my family, my wife, my children don't want me to go and do the last rites of my father. Now, the story why I want to start with you, sir, is that in that phase, do you even realize how much day in and day out the Odisha government, the BMC, the people have come and taken bodies after bodies, cremated them and given them a dignified farewell. So this is how our government actually supported us silently, and we never realized it. We realized as administrators, when I used to just text the Honorable Health Minister, and I am saying WhatsApp, that, sir, we don't have the supply of Remdesivir. There used to be an instant reply, Madam, this is how you are going to get it. I didn't have to go to any senior bureaucrat or anybody to get access to the government. So as an administrator, I thank the government, and I have worked in other states that way Odisha has worked with the private hospital or government hospital or be it any hospital. I would really appreciate and a commendable care. Now bringing it back to that, today when we are standing here,
Do you realize the strength of the digital media? Today, when we have a BSKY patient, like our Honorable Minister said that BSKY is our Honorable Chief Minister's dream. If a BSKY patient is not treated properly, he or she just has to tweet in the social media or send a note and it goes to the SAME's office. So what happens with that is, there are two ways to it. Sometimes some people say, yes, everybody has an access. But it is very important to be accountable for the services you're given. And accountability is going to bring in quality. We are talking about affordable healthcare. Affordable healthcare is an India's motto, our Honorable Prime Minister's motto, our Chief Minister's motto. But do you think affordable healthcare has to be also thought with quality healthcare? In my talk today in the conclave, and a very, very strong suggestion to our Honorable Minister who's come as the chief guest today, is that quality healthcare, where government is spending so much of money on healthcare, and government is actually going leaps and bounds to bring in good healthcare in the state, why can't we also follow other states who are getting into government hospital accreditations? They are getting into quality certifications and accreditations. A lot of hospitals in Kerala, a lot of hospitals in Gujarat have done that. With what is going to happen is a better accountability of what has been spent by the government, accountability of the processes, documentations and services which we can give to the patients. So my first suggestion would be to the government that if you can bring in a little more quality towards the government setups. And the second part would be that affordability does not limit to just the patient's affordability. Affordability also depends on the investor's affordability. So today, to run a hospital, we need about 63 licenses. We need huge infrastructure cost, and only for running a statutory and legal compliances, we have a lot of expenditure. So another suggestion and another request to the government, that let us help good investments, healthcare investments in this country, in this state. Let us make it easy for the investors to come and invest in healthcare. Today, the bed rent above 5,000 is plus GST. Yes, there are a lot of expenditure the government is doing, but who will invest if you do not give that leverage? So as healthcare is a social responsibility for the state, I would also request that if government can look into a better investors, help the investors to invest good infrastructure in the state. So with that, I conclude my session, and I would like to really appreciate that Odisha Bytes has taken up a very, very good topic, a very sensitive topic, because in our industry, we do not have any shortcuts. The doctors cannot say that, oh, I forgot to do this. So it's a very sensitive industry. There are a lot of stories behind, but thanks, Sandeep ji, that you have taken up this industry and this topic today. So thank you very much. Namaskar. Thank you very much, madam, for that crisp address, but addressing exactly to some of the key concerns in the health sector in the entire industry. So thank you very much for that address, madam. And now aguku badiba ebong bartaman mu anurod karibi ajira amar ei valedictory session ro je mukhya athithi माननीय मंत्री श्री प्रीति रंजन घड़ई महोदय को से हमको एड्रेस करिवे. सो प्लीज गोटे जोरदार ताली देकी सर को हमें स्वागत करिबा. थैंक यू. आज कार्यक्रम रो स्रष्टा ओडिशा बाइट्स एवं ओडिशा संवाद मुख्य श्री संदीप मिश्र महोदय, जहाँ को दीर्घ वर्ष धरी आम देखुचु सी जड़े भल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आउर स्पोर्ट्स उपर भी मध्य बहुत अधिक नॉलेज अच्छी. राज्य रे अनेक लोक परामर्श नियंती. निश्चिंत भाव में आपण मैंने भी बसी भावुए सी तो निश्चिंत किसी पॉलिटिकल कनक्लेव करि पारथांते ना स्पोर्ट्स उपर करि पारथांते, किंतु से टॉपिक टी को नेले हेल्थ उपर कनक्लेव को अरेंज कले कना
दिस इज द नीड ऑफ द आवर धन्यवाद जनइबी संदीप भाई की गोटे हेल्थ सब्जेक्ट जोटा कि समस्त को वर्तमान कनसर्न रही स्टेट पाई विशेषकर आम समस्त ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद मुख्य संदीप भाई की से बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी निजर एक्सपर्टाइज निजर एक्सपीरियंस जर्नलिज्म क्षेत्र में पॉलिटिकल फील्ड रे स्पोर्ट्स क्षेत्र में रखी बर्तमान हेल्थ सेक्टर रे जेभली भाव रे निजको सामिल करिसेंती प्रथम थर एभली भाव रे गोटे कनक्लेव आयोजन करिसेंती नीलंजना मुखर्जी रही पुण्य प्रभारथ आगे समस्त रिनाउंड डॉक्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट्स उपस्थित रही सांबादिक बंधु माने तो पैनल डिस्कशन सरी अनेक भल कथा रखी आपण माने मु भी लाइव शो रे देखुली आपण मानक डिस्कशन शुणुली जेते कहले जेते प्रशंसा कले भी डॉक्टर्स कम्युनिटी पाई कम पड़ी जीवो गोटे जर्नल रे देखुली यूएस रे जो डेवलप्ड कंट्री सबुठू वेल्दी कंट्री 7% ता भीतर गोटे पेसेंट निश्चिंत भाव में डॉक्टर भारतीय एते वेल्दी कंट्री डेवलप्ड कंट्री तो दिस इज वेयर आवर डॉक्टर स्टैंड टुडे आज मोर निर्वाचन मंडली सुकिंदार जदि नगड़ा कथा शुणी थे सेठी भी आपण मानकर अवदान रही आज यूएस रे भी मध्य आपण मानकर सेठी पेसेंट ट्रीटमेंट रे आपण मानकर सेतिरे योगदान रही नगड़ा ठू नहीं कि यूएस पर्यंत ये भारतीय डॉक्टर्स मानकर सबु जगह प्रेजेंस रही आपण मानक एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस को आपण माने सबु क्षेत्र रे नियोजित करिसेंती ये गोटे सौभाग्य आसंता काली विश्वविख्यात घोष यात्रा समस्ते अनै बसिचंती प्रभु जगन्नाथ को रथ उपरे देखिबा पई आसंता काली भी मध्य डॉक्टर्स डे ये मोर सौभाग्य ये भगवान कर चलंती प्रतिमा आपण माने डॉक्टर्स माने आपण मानक भितर गहन रे आज उपस्थित निजको रखी पारिछि ये मोर सौभाग्य कोरोना समय रे जेते धन्यवाद देले भी कम पड़ी जीवो आज यदि 2 वर्ष आपण माने आज परिश्रम करी न थांते आज बधे कार्यक्रम भी आज कॉन्क्लेव भेटी आमे करी पारि न थांतु अनेक डॉक्टर्स आपणकर मेडिकल आपणकर हेल्थ फ्रेटर्निटी अनेक लोक मानकर जीवन जाइछि समस्त को तांकर अमर आत्मार सद्गति निमंते प्रभु निकट प्रार्थना करुच्ची सैक्रिफाइस आपण गोटे इनविजिबल एनिमी सांगरे लड़ई आपण माने जारी रखिचंती यू आर द फ्रंट वॉरियर्स किछि एक्सपीरियंस मु जोठी देखिछि खाली एट आपण माने तो समस्त रिनाउंड डॉक्टर्स बसिचंती एठी आपण माने समस्तंकर गोटे लक्ष्य नहीं कि बसिचंती संदीप मिश्र भी जो कॉन्क्लेव टिके आयोजन करिसेंती तांकर लक्ष्य भी मध्य रही राज्य एवं देश रे किबड़ी भाव रे क्वालिटी हेल्थ केयर आमे समस्त जनसाधारण पाखरे पहुँचे पारिबा टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पुअर नीडी समस्त को किबड़ी भाव में सुरक्षित रखिपार जो थे आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे स्मार्ट कार्ड दे आज सुरक्षित रखिंट प्रत्येक व्यक्ति की 20 वर्ष तले 3टी सरकारी मेडिकल कॉलेज आज 8टी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट रो 3टी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आसंता वर्ष पुणी 3टी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलिबा को जाउची तो रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आसीबा को जाउची शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स देखा दब नाही सबु जगह भी आपण मैंने देखुए प्राइवेट हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सबु जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रे जेभली भाव में वर्तमान प्रायोरिटी रखा जाइछि आसंता वर्ष रे निश्चिंत भाव में समस्त जनसाधारण को आमे एफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर पहुँचे पारिबा मोर खाली किछिटा अनुभूति मु देखे जोठी मु भी गोटे पेसेंट है कि जेते बेले अनेक जगह आमे भी लोक मानक पाखरे पहुँची थाउ गोटे कोर क्लिनिकल प्रैक्टिस स्किल जोटा कोर क्लिनिकल स्किल आगुरु आमे भी पिला बेले जेते बेले डाक्तर पाखरे जाई बसु से 15 मिनिट हो 20 मिनिट हो अध घंटे हो आम कथा को शुणती आमर इतिहास को शुणती रोग कौन है ये जो गोटे पेसेंटर हिस्ट्री पेसेंट और डॉक्टर भितर जो ट्रस्ट जो डेवलप करे जो गोटे जो फैमिली रिलेशनशिप डेवलप करी जाए मु भी आज भी मन अच्छे छुआ बेले जो डाक्तर मान सागर मु ट्रीटमेंट करूली आज पर्यंत से संपर्क को डाक्तर पेसेंटर संपर्क ना सी जो आत्मीयता जो बॉन्डिंग जो डेवलप करी जाए पेसेंट जिते बड़े निजर हिस्ट्री जिते बड़े कही था गोटे डॉक्टर पाखे कहीं सेते बड़े जेभली भाव में गोटे गुड लिसनर भाव में जिते मोर हिस्ट्री की जेकोसी पेसेंट शुणी था आगुरी
अनेक जगार से डॉक्टर माने भी से रोग को भी कोठी ना कोठी डायग्नोस करि पारंती कोठी समस्या रही कहीं एबे एते मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऊपर डिपेंडेंट हो गले एंटायर सिस्टम बर्तमान मेडिकल सिस्टम निहाती आवश्यकता रही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने को पड़ो इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड एटी को आम इग्नोर करें ना जिते जन आम बसी एक्जाक्टली आम समस्ते आज समस्ते वे विटनेसिंग आम समस्ते टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिकल भी आज के दिन मेडिकल साइंस भी टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ताको आम इग्नोर करें ना किंतु ये गोटे बड़ चैलेंज ये समय आवश्यकता एंटायर वर्ल्ड वर्तमान से दिग को आपण मानकर समस्तंकर अनेक एक्सपीरियंस रही से कोर क्लिनिकल स्किल को जिते जल्दी आम पुणी कहीं ये समय अव्यवस्था आम टाणी नहीं कौटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेज हो कौटी पेशेंट्स मानकर अधिक रु अधिक पेशेंट्स इनफ्लो रोचंती तो डॉक्टर्स माने कौटी ना कौटी आ समय पाई पारु नाहंती पेशेंट मानकर हिस्ट्री को सुनिबा पाई समय दवा पाई अधिक जगार जोठी कि आपण माने तो एक्सपर्ट्स माने अनेक मेडिकल साइंस मेडिकल रिसर्च इनोवेशन प्रत्येक दिन मेडिकल ऊपर सिस्टम ऊपर मेडिसिन ऊपर टेक्नोलॉजी ऊपर इनोवेशंस चली तापर भीतर को जीवाक चाहू ना किंतु डॉक्टर जो प्रथम कार्यक्रम आम समस्त भितर रही डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को आम से बॉन्डिंग को जिते अधिक रु अधिक बढ़ई पारिबा निश्चिंत भाव में जो दिगरे जो लक्ष्य नहीं कि कॉन्क्लेव आरंभ होईची क्वालिटी हेल्थ केयर पॉसिबल हो पारिबो निश्चिंत भाव में खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करदेले हब नाही पेशेंट्स को जेते बेले आम पेशेंस रखिकी धैर्यर सहित ता परिवार लोकों खाली पेशेंट नो ता परिवार लोकर कथा को सुनिबा को पड़िबो प्रॉपर डायग्नोसिस आम करिपारिबा निश्चिंत भाव में जो लक्ष्य नहीं कि बसीचंती टेक्नोलॉजी के व्यवहार करुचंती निश्चिंत भाव में जो लक्ष्य नहीं क्वालिटी हेल्थ केयर एफोर्डेबल हेल्थ केयर समस्ते से लक्ष्य रे पहुँचवा आज पुणी थे समस्त को आज धन्यवाद जनाऊँगी आज एभली गोटे हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजन करिसेंती पुणी थे निवेदन करी संदीप भाई टी समस्ते करताली दे धन्यवाद जनइबा एकजुट करिसेंती आज समस्त को गोटे महान उद्देश्य नहीं कि जो आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज 4.5 कोटी 90 लाख लोक राज्य रे सुरक्षित रहिबे सुरक्षा कवच देइचंती आज स्मार्ट कार्ड नहीं कि आउरी भी मध्य तार नेक्स्ट लेवल इम्प्रूवमेंट आणुचंती निश्चिंत भाव में खाली कार्ड दे कि ट्रीटमेंट करी दे कि बाहर देले हब नाही तांको किभली भाव में से माने डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करिवे खाली फिजिकल हेल्थ नु मेंटल हेल्थ को भी आमे किभली भाव में तांको रखी पारिबा ठीक व्यवस्था रे से दिगरे कार्यक्रम को आगे नबाक पड़िबा आशा रखुची ओडिशा मो मेडिकल टूरिज्म कहवा ठीक हब नाही आशा भरोसा विश्वास रही ओडिशा समस्त एठिकार मेडिकल फैसिलिटीज उपरे बाहर राज्य अनेक पेशेंट्स आसिकी ए अंचल रे ट्रीटमेंट नहीं जाउचंती ये आपण मानकु सेति समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी कहीं आपण मानकर डॉक्टर्स हेल्थ एक्सपर्ट्स आपण मानक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा रही तो समस्त को आज पुणी थे धन्यवाद जन वक्तव्य शेष करुच्ची वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद सर ओडिशा बाइट ओडिशा संवाद रो जो प्रचेष्टा रे आपण सामिल होती आपणकर शुभेच्छा देछंती आपणकर उपस्थिति आम पई बहुत एनकरेजिंग सो थैंक यू सो मच सर फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स एंड फॉर योर प्रेजेंस एंड नाउ फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स मु अनुरोध करिबी श्री संदीप मिश्रा को टू प्लीज कम फॉरवर्ड सर। धन्यवाद मानसी समस्त को नमस्कार मान्यवर मंत्री श्री प्रीतिरंजन घड़ई महोदय मैडम नीलांजना मुखर्जी मो कॉलीग मैडम पुण्यप्रभा रथ समस्ते आज धैर्य सहित आम गोटे बहुत सेंसिटिव आउ बहुत क्रिटिकल टॉपिक्स उपरे आम पैनल डिस्कशन है आमर इनागुरल सेशन रे स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थिले आमर रिनाउंड डॉक्टर सुब्रत जेना उपस्थित थिले आमर सम अल्टीमेट मेडिकेयर सीईओ मैडम श्वेतपद्मा दास उपस्थित थिले बहुत चमत्कार आलोचना है आमर दुईटा जाक पैनल डिस्कशन रे डॉक्टर नीरज मिश्र डॉक्टर प्रदीप्त पात्र और डॉक्टर जयंत पंडा आमर फर्स्ट पैनल डिस्कशन रे तांकर इनसाइटफुल कमेंट्स देले अबाउट एपिडेमिक्स आर हियर टू स्टे द वे अहेड महामारी सा लड़ई तारी उपर आलोचना करथिले स्पेशली कोविड
COVID-19 फोर्थ वेव कथा जिते आसूची आम समस्त मनरे भय आशंका भरी जाऊँगी से भाया गोटे समय ये गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपरे आलोचना करथिले। आमर द्वितीय टॉपिकटा थिला कैंसर इज बीटेबल द डोस्टल लिमा ऑफ होप जो डॉक्टर कृपा सिंधु पंडा आम रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट ओडिशार प्रोफेसर माधवानंद कर आउ डॉक्टर सौम्य सूरत पंडा तांकर एक्सपीरियंसेस तांकर नॉलेज शेयर करथिले। आमर ए जो प्रचेष्टा आमर सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव एटा आमर ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद तरफ एटा आमर फर्स्ट ऑन ग्राउंड इवेंट आगुरी आम ऑनलाइन रे इवेंट करिछु किंतु जेतेबेले आमे परिकल्पना कलु गोटे आमे इवेंट करवा आमे भाबिलु एटा उचित हबो कि आमे स्वास्थ्य जेहेतु स्वास्थ्य ही संपद आ स्वास्थ्य नहीं कि आमे समस्ते बहुत चिंतित रोचु स्पेशली 2 वर्ष है गोटे महामारी सहित आम जुझुचु ये परिस्थिति आमको निहाती स्वास्थ्य को ही फर्स्ट गुरुत्व देकी आम स्वास्थ्य को कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करूँ। बहुत कम दिन नोटिस आम ऑर्गेनाइज करूँ। आम डॉक्टर मानू सेलिब्रेट करने को डॉक्टर्स डे जेतु रोची इवेंटा प्लान करूँ किंतु डॉक्टर्स डे आप जानी डॉक्टर विधान चंद्र राय मेमोरी को सेलिब्रेट करने को अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने को डॉक्टर विधान चंद्र राय खाली गोटे बहुत बड़ डॉक्टर नथिले बहुत कंट्रीब्यूशन इंडियन मेडिकल साइंस को अच्छी आउ सी परवर्ती परिस्थिति रे वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री भी थिले तो सही दिन को आम करूँ बोली प्लान करूँ ओरिजिनाली किंतु जेहेतु जुलाई 1 कोइंसाइड करुच्ची श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सहित आम भाविलु ता पूर्व दिन करवा तो आम सही परिकल्पना को आज गोटे सकारात्मक रूप दे पारिछु से आम निहाती भाव खुशी आम 2017 मसीह जितेबाला डिजिटल मीडिया रे आमे पाद देलु गोटे स्टार्टअप हिसाब रे आमे ओडिशा बाइट्स कलु सेतेबेले आमे भाबिथिलु कि हाँ वे तो डिजिटलटा ही आगु को सबुठ गुरुत्वपूर्ण मीडिया हम कारण प्रिंट मीडिया रो आग भाया चाहिदा रोना आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी लोक मैंने समस्ते व्यस्त बहुल जिंदगी भितर जीवन यापन कर समस्ते मोबाइल देखुंट ब्रॉडकास्ट जो मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री काम कर बहुत सुदूर प्रसारी प्रभाव रोचे किंतु लोक पाखे हुए तो सब समय होनी टीवी आगे बसी देखा से आम आरंभ कर ओडिशा बाइट्स आरंभ करूँ। आमर यहाँ 5 वर्षर जर्नी 2018 आम ओडिशा संवाद आरंभ करूँ। आमर ऑर्गेनाइजेशन ना फ्रंटियर मीडिया 3टा डिजिटल प्लेटफॉर्म ओडिशा बाइट्स ओडिशा संवाद सहित एजुकेशन बाइट्स बोली आम गोटे एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन डोमेन रे भी काम करूँ। तो आम भावुँ जो चिंता नहीं कि आम आरंभ करूँ से चिंताटा हुए तो फलप्रद होती कारण आज ओडिशा रे जते इंडिपेंडेंट डिजिटल गणमाध्यम अच्छी ता भितर ओडिशा बाइट्स नंबर 1 सो आमको सेटा कहबारे बहुत गर्व अनुभव होची जे आमे जो निष्पत्ति नैथिलु आमे सेटा को सकारात्मक भाव में गोटे पॉजिटिव माइंड नहीं कि आम कम करूँ क्रेडिबल न्यूज़ दौचु आ जेहेतु आम न्यूज़ आ कंटेंट उपर डेलीवर कलापर आम भावुँ वे तो नेक्स्ट लेवल जीवाई सबु प्रकार स्टेक होल्डर्स सहित आम एनगेज कर आवश्यकता अच्छी से इवेंटर परिकल्पना आगु को भी आम आहरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करूँ। सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव को आम गोटे एनुअल इवेंट करने आम योजना करुचु सबु वर्ष आम सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करूँ अलग सेक्टर्स रे भी आम कि आगु को इवेंट्स करूँ। मु धन्यवाद देवी आम समस्ते जो मैंने उपस्थित रहे समस्ते स्पॉन्सर्स आमको गोटे सक्सेसफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करने को साहाय्य करते थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। Thank you very much sir for those concluding remarks এবং বর্তমান আমি আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং আমার গেস্ট অফ অনর को ओडिशा बाइट्स এবং ओडिशा संवाद तरफ सम्मानित करवा मु अनुरोध करी संदीप सर को এবং पुण्या मैडम टू काइंडली कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री प्रीति रंजन गढ़ई फॉर हिज वैल्यूएबल प्रेजेंस एंड फॉर हिज इनसाइट्स ऑन सुश्रुता द हेल्थ कॉन्क्लेव। Thank you so much. I would request Punya Madam now to kindly felicitate Ms. Nilanjana Mukherjee Madam, Vice President and Unit Head of Amri Hospitals, Bhubaneswar. She's been a wonderful host. She did the event at a very short notice, but we really thrilled. बहुत बढ़िया भाव में से संयोजना कले आज कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच मानसी।
Thank you very, very much, sir and madam, for that honor. And now, to propose the vote of thanks, may I request Ms. Punya Pravaratho, madam, please. I think I need to wind it up first because everybody is really waiting. So it's curtained for this eventful day today. And I really want to thank our distinguished guests, panelists, and moderators. And I also want to thank Mr. Minister and Ms. Mukherjee, especially being with us since the beginning of the event and patiently sitting through all the sessions. And thank you, sir, for giving us all the insights, talking about your experiences, challenges, and hopes in the field of health. And last not the least, I would like to thank our sponsors, Some Ultimate Medicare, Aswini Group of Hotels, Amri Hospitals, Zikitas Health Care Limited, and Entertain, our event partner, for helping us and supporting this vision of Sandeep Mishra and Frontier Media and everyone associated with it. Thank you.